Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, in the previous lecture, we seen Weege-Stone bridge without using of the Kirchhoff's law. That means on the basis of the concept of potential difference, we prove P by Q will be equal of R by S, where P and Q are known as ratio resistance, capital R, that means a resistance box, or non-resistance, and capital S. Capital S, that means a unknown resistance. According to the board exam, for the board exam question, define the Weege-Stone bridge using Kirchhoff's law under the following points. First one, principle. Second one, label diagram or circuit diagram. Third one, explanation. Fourth one, derivation or mathematical expression. Then uses and limitations. Now we will start the question with diagram. Here, what is the mean of Weege-Stone? Weege-Stone is a name of scientists which defined the Weege-Stone bridge. Bridge, that means a circuit in the form of bridge. You know that very well. Bridge, a connection between the two in the shape of the diagonal. So Weege-Stone bridge is a device which used to determine the value of unknown resistance by use of any other three arrangements, both for resistance arranged in particular shape like a quadrilateral. Okay, student. Weege-Stone bridge is a device which used to determine the value of unknown resistance by use of specific arrangement. In the case of Weege-Stone bridge, we used a four resistance. Okay. First one, P. What is the mean of P? P, that means a resistance, but P and Q both are known as P and Q both are known as ratio resistance. What is the mean of ratio resistance, student? Let me consider P by Q will be equal. The value of P will be equal of 2 and the value of Q will be equal of 4, such that ratio between P and Q will be equal of 1 by 2, that means of 1:2. अगर जो हम ठीक है फर्स्ट रीडिंग में ठीक है दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल की चीज है, तो अगर जो हम P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो हमको सेकेंड स्टेप में सेम रेशियो चाहिए, मतलब में 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, देन 1/2 विल बी इक्वल ऑफ 1/2. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं what is the mean of the P and Q? P and Q are known as ratio resistance. Then what is the mean of capital R? Capital R, that means resistance box. What is the mean of resistance box? Resistance box, also known as post office box. Resistance box, also known as post office box. The circuit diagram as follows. ठीक है, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है. हियर वी यूज्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, resistance of 2 ohm, then resistance of 5 ohm, then after 10 ohm, then after 20 ohm, then after 50 ohm, 100, 200, 300, 400 and so on. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, अगर जो आपको कैपिटल आर की वैल्यू 1 ओम चाहिए तो आप यहां से 1 ओम को क्या कर देंगे, डिसमिस. ओके स्टूडेंट, बाहर निकाल लेंगे. सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 ओम. अगर जो यहां से हमने 2 ओम को निकाला है तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ 2. सो P and Q are known as ratio resistance. Capital R, that means a known resistance or resistance box or post office box. Last one, what is the mean of capital S? Capital S is a unknown resistance. Weege-Stone bridge is a device to determine the value of unknown resistance by use of specific arrangement. Okay student, capital S is a unknown resistance. बट लेट बी कंसिडर आर टर्मिनल्स. हम यहाँ पॉइंट के नाम दे देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी. इन बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी वी यूज्ड अ सर्किट. कौन सा सर्किट सर? गैल्वेनोमीटर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स वी यूज्ड इन द फिजिक्स? फर्स्ट वन इज द ammeter,
second one is the voltmeter, and third one is the galvanometer. The purpose of galvanometer is a device which indicate the direction of flow of current. सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं सर्किट को चेक करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर. टू यूज गैल्वेनोमीटर वी यूज्ड अ सिंपल की. ये एक हमने की लगा दी है, विल बी इक्वल ऑफ K1. और देखिए इस पूरे सर्किट में कहीं ना कहीं मुझे करंट देना पड़ेगा. लेट वी कंसिडर कैपिटल E. Capital E is any external source or any external battery. That means consists the two terminal, positive terminal and negative terminal. Okay student, we know that about the direction of flow of current. The direction of flow of current always passing through positive to negative. Okay student, you know that about the direction of flow of current always positive to negative. But for the on and off of the cell we used another plug key K2. What is the mean of the K1? K1 that means a galvanometer key, and K2 that means a battery key in a normal language. Now time to define a flow of current. From the battery we getting the total amount of current will be equal of capital I. From the battery capital E. Okay student, total amount of current will be equal of capital I. Let me consider another real example related to our life. मान लीजिए कोई एक पाइप आ रहा है जिससे वाटर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10 लीटर. ओके 10 लीटर वाटर. अब इसके बाद यहाँ पर इसके कितने कनेक्शंस हो गए, 2 कनेक्शन हो गए. तो ये जो वाटर का सप्लाई है ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. वेरी गुड. दैट मीन्स I विल बी डिवाइड फ्रॉम A in the form I1 and I2. Let me consider amount of current, total amount of current passing through resistance P will be equal of I1. Total amount of current passing through resistance P will be equal of I1, and total amount of current passing through resistance box capital R will be equal of I2. Okay, now at a point B we getting the total amount of current will be equal of I1. Here I1 divide into 2 parts, these and these. Here we used a galvanometer, so we used a simple word Ig. What is the meaning of the Ig? Total amount of current passing through galvanometer. Total amount of current passing through the galvanometer. At a point capital B we consume the total amount will be equal of I1 and Ig passing through galvanometer, such that we getting the current will be equal of I1 minus Ig from the resistance capital Q. Okay student, initially we getting the total amount of current will be equal of capital I distribute into I1 and I2. I1 on the point B. From the point B we categorized into 2 category, galvanometer and resistance Q. On the galvanometer we getting the total amount of current will be equal of Ig. On the point Q we getting the current I1 minus Ig. Now defining the point D, what is the mean of the D? We getting the current from the A will be equal of I2. यहाँ से कितना करंट आ रहा है स्टूडेंट, I2, and from the galvanometer we getting the current will be equal of Ig. मान लीजिए ठीक है ये सर्किट करंट है, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा मुझे, Ig. यहाँ से मुझे मिल रहा है I2 और यहाँ से मिल रहा है Ig, तो मुझे आगे की तरफ टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ I2 प्लस Ig. ओके स्टूडेंट, we defined the flow of direction of current and what amount of current passing through each resistance. Here a circuit diagram to represent only the direction of current and amount of current. Now we telling a simple relation between the potential. What is the mean of the potential? According to the Ohm's law we know that V is a directly proportional of I, such that V will be equal of IR. What is the mean of V? V that means a potential, I that means a amount of current, and R
R that means a resistance. Student, let me consider we define the total amount of potential on the resistance P. फर्स्ट सबसे पहले अपन किसके लिए देखेंगे? P के लिए, फिर अपन किसके लिए देखेंगे? Q के लिए, फिर अपन किसके लिए देखेंगे? R के लिए, और फिर अपन किसके लिए देखेंगे? S के लिए. Here we know that V will be equal of IR. V that means the amount of potential. So on the resistance capital P, what is the resistance of this? इसका रेजिस्टेंस को हम P बोला, इसको रेजिस्टेंस को Q बोले, इसके रेजिस्टेंस को R बोले, और इसके रेजिस्टेंस को X. Let we consider the value of resistance of galvanometer will be equal of Rg. What is the mean of the Rg? Total amount of resistance of galvanometer. Now potential V equal to IR. I, that means a current, so will be represented by I1, and R that means a resistance, that means a P. So total amount of potential on resistance P will be equal of I1 P. Here the total amount of resistance that means a current I1 minus Ig into Q. Here the total amount of potential will be equal of I1 minus Ig into Q. Here the total amount of potential will be equal of I2 into R. Okay student, here total amount of potential will be equal of I2 plus Ig into S. And finally total amount of potential on galvanometer will be equal of I2 and Ig. Now student, we taking the second part of this question, Weegee-Stone bridge. By use of Kirchhoff's law, we study Kirchhoff's law, then we apply Kirchhoff's law in this circuit. Now finally P by Q will be equal of R by S. Student, now we defining the terms. What is the mean in P and Q? P and Q are known as a ratio resistance. Okay guys. Now capital R. What is the mean of the R? R that means a known resistance. First one known resistance. मैं सोच रहा था आपको कौन कौन सा नाम बता दूं. Second resistance box, and you also know that post office box. पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज अ टेक्निकल नेम. जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा लैब में इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. व्हाट इज द मीन ऑफ द एस? एस दैट मीन्स अननोन resistance. We have to derive the value of unknown resistance by use of Weegee-Stone bridge. इसको मैं शंट भी बोल सकता हूँ. मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा शंट मतलब क्या होता है. G that means a galvanometer. and Ig that means a amount of current bypassing galvanometer. Okay student. Now Rg that means a resistance of galvanometer. E that means a external source or external battery. Okay. Then after K1 and K2 that means a plug key and total amount of current. Okay student. Now finally time to derive a derivation. Student, what is the purpose of galvanometer? Galvanometer is a device which used to indicate the direction of flow of current. मैं आपको समझाता हूँ. जब हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा. डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डिफ्लेक्शन मिलेगा, बट एक ऐसा डिफ्लेक्शन मिलेगा जहां पर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री. दिस पोजीशन आर नोन एज नल डिफ्लेक्शन. क्या बोला इसको? नल डिफ्लेक्शन. या तो हम इसको नल डिफ्लेक्शन बोलेंगे
एट नल डिफ्लेक्शन, और या तो नल डिफ्लेक्शन बोलिए या तो एट बैलेंसिंग condition. What is the meaning of the balancing condition? The total amount of current passing through galvanometer will be equal of zero. याद रहेगा जब भी हमने बोला condition of balancing, that means the total amount of current passing through galvanometer will be equal of zero. That is the first point. और अगर जो आप technically और समझना चाहते हैं, galvanometer arranged between the point B and arranged between the point D such that the total amount of potential on the point B and D will be same. This statement follow the condition of balancing. Okay student, now time to define the Kirchhoff's law. बिल्कुल प्यार से देखिए, मैं यहाँ पर ये मेरे लिए एक क्लोज सर्किट है और ये मेरे लिए दूसरा क्लोज सर्किट है. ओके स्टूडेंट, दिस क्लोज सर्किट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी डी एंड ए इन क्लोज्ड सर्किट नाम ए बी डी ए बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. ओके स्टूडेंट, मैं आपको किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा. आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3. हाउ मेनी एजेस आर देयर, 1 2 एंड 3. पहले पर पोटेंशियल कितना दिख रहा, बोलिए मुझे, I1P. कितना दिख रहा मैंने, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी डिफाइंड बाय द I1P एंड सेकेंड वन विल बी इक्वल ऑफ I2 and I2 Ig and amount of potential will be equal of I2 into R will be equal of 0. सर हमने किरचॉफ्स लॉ में बहुत प्यार से सुना है, देखिए, टोटल विल बी इक्वल ऑफ 0. ये सेकेंड लॉ था. अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ 0. अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ 0. ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू डिफाइन द डायरेक्शन. जरा ध्यान से देखिए इस वाले में, देखिए, अगर जो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. ओके, और ये कैसा है, अप टू डाउनवर्ड्स, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव. दिस बोथ आर द नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट, ये दोनों हमने नेगेटिव लिया और इसको हमने कैसा लिया, पॉजिटिव. टोटल विल बी इक्वल ऑफ 0. बट finally we know that total amount of galvanometer will be equal of 0 such that Ig will be equal of 0. Then we getting minus I1P minus 0 plus I2R will be equal of 0. Next step, minus I1P plus I2R will be equal of 0. So I2R will be equal of I1P. But according to the principle of Bridgestone bridge, we have to find P by Q. मुझे P इस तरफ चाहिए तो मैंने बहुत अच्छे से लिख लिया, P will be equal of I2R. Equation number first by Kirchhoff's second law in mesh A, B, D, A. Okay student, now we taking the second part. In closed circuit BCDB. Here how many resistance are there, 1 2 3. 1, that means I1, potential I1 minus Ig into Q. Okay student, here potential will be equal of I2 plus Ig into S, and here potential will be equal of I2 Ig will be equal of 0. Okay student, this is a potential on resistance Q, this is a potential on resistance S, and this is the amount of potential will be on the galvanometer G. Okay, now direction. Here the movements of the current is a anti-clockwise. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर
ये जो होगा ये कैसा होगा पॉजिटिव और ये दोनों कैसे होंगे नेगेटिव. सो वी टेक नेगेटिव सिग्नेचर ऑन द रेजिस्टेंस Q एंड द रेजिस्टेंस S. ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट. ओके, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. ये मेरा पॉजिटिव है तो ये भी मेरे लिए कैसा होना चाहिए पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव है और ये कैसा होगा नेगेटिव. But we know that the total amount of current passing through galvanometer will be equal of 0 such that यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा. Then we getting I1 into Q plus I2 into S minus 0 will be equal of 0. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव I1Q will be equal of negative I2S such that माइनस से माइनस कैंसल होगा. I1Q will be equal of I2S. This is a second expression. I hope student you getting up properly. Kirchhoff's law का यूज करेंगे in the closed circuit BCDB by using Kirchhoff's second law. Student, we getting the equation number first and equation number second. Equation number first will be equal of I1P equal to I2R and equation number 2 will be equal of I1Q equal to I2S. Now by using equation number first and second, we have to divide equation number 1 divide by equation number 2 such that I1P divided by I1Q will be equal of I2R divided by I2S. That means LHS divided by LHS and RHS divided by RHS. I1 cancel by I1. Then we getting P by Q and here I2 divided by I2 such we getting R by S. That is a final result related to Bridgestone bridge. In the case of the Bridgestone bridge, we have to prove P by Q will be equal of R by S by use of Kirchhoff's law. Thank you so much student. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajuda. Student, please like, subscribe and also study from channel.